for the last 32 years, hundreds of Kashmiri Hindu families have been living in exile. They've been reliving the horror of what they saw, the atrocities, the gory and grotesque crimes. But what's worse is that for 32 long years, they have been forced into silence. The Times now is going to ensure that their voice is heard. It's the least we can do. Give them a platform to voice their pain and demand justice. That's the least we can do to play a small part in the fight for justice that Kashmiri Hindus are fighting for. Which is why tonight we are going to be speaking to the family members of 3 Kashmiri Pandits who were gunned down in broad daylight in 1989, one of the very first few murders that triggered the exodus. Rajendra Koul Premi, son of Sarvananda Koul Premi, and Ashutosh Taploo, son of Tikalal Taploo, now join us live on this broadcast. Thank you so much for speaking with us, both gentlemen. Now, Mr. Premi, I want to begin by asking you, I'm sure these are very tough times for you because this film has revived so much, and this is on top of the 32 years of injustice. So would you please narrate what you saw, what happened with the family? Yeah, you know, Pandit Tikalal Taploo was the National Executive Committee member of the Bharatiya Janata Party and the Vice President of the BJP. He was very well known person within the minority as well as the majority community. So just hold your thoughts, sir. Just hold your thoughts. I asked that question of Mr. Premi. If you could take that one, sir, please. Around us are not good, are not conducive. We will have to leave, we will have to do something, but he overruled everybody, saying that मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? I have not harmed anybody. Why should they harm us? On 24th of April 1990 was the Eid, छोटी ईद, फितर जिसे कहते हैं वहाँ पे, तो ही सेड कि इस साल में घरों में नहीं जाऊंगा ईद मुबारक देने के लिए. ही इनवाइटेड ऑल ऑफ देम टू हिज प्लेस एंड वी एंटरटेन देम विद अ कप ऑफ टी. ही रोट एन इन्विटेशन लेटर टू देम requesting them to have a cup of tea at his home because the environment those days was not quite good. It was not conducive for him to go home after home, and we had 60 people, around 60 people of our village, citizens council at our home, offered them tea and they promised, Khuda ki kasam, Muhammad ki kasam, Khane Kaaba ki kasam, you will be safe, we are here, nobody can harm you, आप हमारे रक्षक हैं, हम आपके रक्षक हैं, because every now and then my father used to help them. He helped every poor, he helped anybody whosoever came to him for any help, and he was always ready to help anybody. But this was betrayed. ये trust खत्म हो गया, विश्वासघात हो गया. On the night of 27th of April 1990, if I remember correctly, 3 people, 3 militants, masked men, 3 terrorists knocked our back door of the big house. They knocked the door, we went outside and they said we have to go to some गुलाम रसूल के घर पे जाना है. हमने कहा भाई हमारे पूरे इस इलाके में कोई गुलाम रसूल नहीं रहता है. They said फिर पछताओगे तो दरवाज़ा खोल दो. इसी में somebody forced his entry to our house. There were 3 boys, I still remember. I am a live witness to the situation. I was there. My younger brother Virendra Veer, Hanuman of the family, was also there. My youngest brother Ravinder had already he was already in his job in Delhi only. But the problems for the family had only begun because 9 years after that, your mother petitioned the government, demanded a CBI probe, but the J&K government under Farooq Abdullah said that the CBI probe at this stage would serve no purpose. Sir, इसी के बाद not only an expeditious and speedy inquiry, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि at this point of stage no purpose of
will be served by handing over this case. इसके बारे में मिनिस्टर ऑफ होम जो थे उस समय के भूतपूर्व श्री एल के एडवाणी जी, उन्होंने चिट्ठी लिखा उस समय के जो राज्य के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनको चिट्ठी लिखा कि ये केस हैंड ओवर करें सीआईबी को, और उसमें ये स्टेट का रिकमेंडेशन होना जरूरी था, शायद इसलिए कि धारा 370 थी, सो मोटो ये नहीं कर सकते थे। लेकिन अफसोस की बात है, शर्म की बात है, लेटर का जवाब उन्होंने दिया कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो पर्पस विल बी सर्व्ड। तो इसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला गया, उन्होंने मेरे पिटीशन को स्टेट गवर्नमेंट में भेज दिया कि आप ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में काइंडली लिसन टू हिम फॉर दिस एंड फॉर एन लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ दिस केस। उन्होंने मुझे 4 साल 4.5 साल तक सुना, और सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, जितने भी वकील आ रहे थे उनके, दे वर ऑल डिफीटेड विद माय सिंपल आर्गुमेंट। हमारे दोनों मकानों को जलाया गया, हमारे मंदिर को डिमोलिश किया गया, जो ये किडनैपिंग एंड असैसिनेशन का केस है वो तो फॉर्मल एक एफआईआर दर्ज करी उन्होंने। आई वांटेड ए प्रिसाइज, आई वांटेड द एग्जैक्ट डेट, आई वांटेड द एग्जैक्ट एफआईआर, जितनी भी वहां पे हुई थी ये इसकी कहानी वो सारा एफआईआर में दर्ज हो, ताकि कल लोगों को पता चले कि क्या असली हुआ था। मकानों का एफआईआर भी है, इसका त्रासदी का भी एफआईआर है, लेकिन जो हमारा काउशेड था उसका कोई एफआईआर भी नहीं है। जब 2 मकान जलाए गए, बीच में ये था, तो कैसे हो सकता कि वो बच जाए। अब जो मंदिर था हमारे सामने 100 मीटर्स अवे, उसको भी उन्होंने डिमोलिश किया, उसका भी एफआईआर है, लेकिन वो एफआईआर कॉपी आज तक भी मुझे नहीं मिली है। एफआईआर नंबर मुझे बताते गए कि गवर्नमेंट्स हैव बीन इन डिनायल, एंड पूनम, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट एडमिट व्हाट्स द प्रॉब्लम, how will things move forward? Absolutely, and I want to get in Ashutosh Taploo. Mr. Taploo, your father was also killed in broad daylight at point blank range. 8 rounds were fired at him, and I'm sure it's a very difficult memory for you to talk about, for you to relive. But who do you hold responsible for what happened that day when your father was actually en route to work, was en route court when the incident happened, when he was killed and shot dead in cold blood? Yeah, 14 September, a day before, he publicly gave a lecture. Last lecture of Pandit Tikalal Taploo was on 12th September, when he said that people were thinking that this Kashmiri will be freed from the Kashmiri Pandits, or they are looking for the Azadi. It is their dream. उनका एक स्लोगन था, कोई गोली ऐसी बनी नहीं हुई है जो टिकालाल टपलू की छाती को पार कर सके. And same thing happened. When I asked the neighbors what had happened that day, they told me that Tikalal Taploo was playing with the kids outside his house. Then the militants fired on his back. He moved and told them, please fire on my chest. If you have guts, fire on my chest. We are firing on my back. So then he collapsed. And that was very brave of him, what he did. It is also very brave of the fact that he actually stayed there despite several well-wishers that actually told him to leave Jammu and Kashmir. He did send his family back though here in Delhi, and he went back because he was not going to be cowed down by the terrorists who were trying to unleash the terror there. But do you think the government back then was responsible? They could have done more. They could have stopped what was going on? I don't understand one thing. Just 2 years back, Article 370 was removed. Not even a single stone was pelted on the street of the Kashmir Valley. Who stopped our government? They could not save 3.5 lakh Kashmiri Pandits in the valley in this September month and January 1919. Was our government sleeping? They were not knowing what is going on. How it is possible that even a single day, 19 January 1990, all over the places of the Kashmir Valley at the same time, there was a Azadi from the loudspeakers of the masjids. Those days there was no internet. Those days there was no WhatsApp, no communication, no mobile.
So this conspiracy was going long back, and the government of India and the Kashmir government was sleeping. Right, but it's been 32 years now, 3 decades. Several governments have come and gone. Can you tell us about what exactly has happened in the last 30 years for you, for your fight for justice? Absolutely. No action was taken against them. I am telling you one thing. National Executive Committee member of the Bharatiya Janata Party, Vice President of the BJP, who got killed, I don't have his death certificate. There is no FIR launched against the people. Who is responsible for this? 30 years I'm still looking for the justice. And in the last 30 years, I don't even have the death certificate of my father. What can a son think about this? I have written to the many government organizations, but no one is replying me. There are many such cases. People have not even got the death certificate. Poonam, this is the state of affairs 32 years later. So much has changed, but very little for all these people. Now, Mr. Koul, are you hopeful? You are listening to Mr. Taploo intently. Are you hopeful that things will change? Definitely sooner the better. जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फाइंडिंग्स दे दी, डिसीजन दे दिया, उसमें उन्होंने लिखा कि सूनर द बेटर, एंड दे आल्सो वर एपोलोजेटिक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे सेड, पहले तो कहा कि तुम्हारे घर में पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, आर्मी थे, देन समबडी सेड दैट यू आर लायबल फॉर रेंट, यू आर एंटाइटल्ड फॉर रेंट, बाद में कहते हैं कि साहब ये 1-2 दिन में रहे। अब हमारी जो बाकी घर की बाकी जो बची खची संपत्ति थी उसको उन्होंने औकाफ कमेटी ने किसी के हवाले किया। अब कहते हैं कि साहब वो नहीं थी, वो तो खत्म हो गई, एंड वी हैव लेटर्स फ्रॉम देम कि साहब आप किसी आदमी को भेज दीजिए, आप लेटर भेज दिए। मैंने कहा कि हम किराया दे देंगे, आप जम्मू तक हमें ये पहुंचा दो, जम्मू विल पे द रेंट। इतना ही नहीं, हमने जो मंदिर का कंपनसेशन इन्होंने दिया है, वी हैव सरेंडर्ड दैट कंपनसेशन इन फेवर ऑफ द लोकल मास्क, क्योंकि मंदिर तो किसी की जायदाद नहीं है, किसी की पर्सनल जायदाद नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल से कि मस्जिद भी किसी की जायदाद हो सकती है, और ना चर्च ही किसी की जायदाद हो सकती है। ये तो सारे भगवान के घर हैं, इसमें आप किसी को कंपनसेशन दे रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ही शुड एक्सेप्ट इट। और मैंने उन्हें एक मदर की तरफ से एक एफिडेविट भी बना के दिया कि काइंडली ट्रांसफर दिस कंपनसेशन टू द लोकल औकाफ कमेटी। मुझे नहीं मालूम कि वो दिया गया है जी नहीं। वी हैव नॉट सोल्ड इवन एन इंच ऑफ माई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। राजेंद्र कौल जी, आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं? अभी जो सरकार है, क्या संदेश है आपका, क्या चाहते हैं आप उनसे? जो आजकल का वातावरण है, हमने 32 साल तक जो जद्दोजहद की जस्टिस के लिए, जो हमारी स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल है, उस जद्दोजहद में, उस स्ट्रगल में हमें आज तक नहीं, आशाएं बहुत है। मैं अभी भी, मुझे न्यायपालिका पे इतना विश्वास है जितना मेरा विश्वास अपने भगवान पे है। मेरा विश्वास सरकारों पे इतना है जितना न्यायपालिका पे भी है। आजकल पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, एक हमारा जिनोसाइड का बिल अगर उसको एनेक्ट किया जाता है, जो जिनोसाइड का बिल है, बिकॉज वी डोंट हैव ए लॉ टू डील विद जिनोसाइड, शायद इसीलिए ये कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई सरकार कमजोर नहीं होती। इफ देयर इज ए विल, देयर इज डेफिनेटली ए वे। और मैं बार बार ये कहता हूं कि इस एक एस्टैब्लिश कमीशन हो जो तमाम इंक्वायरी करे। कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी एस्टैब्लिश्ड which will go into the genesis of the problem which led to the genocide of this Kashmiri Pandit community. एक जो genocide का बिल है, पार्लियामेंट सेशन ऑन है, तो मुझे लगता है कि उस जिनोसाइड बिल को लाना जाया चाहिए, ताकि जितनी भी कम्युनिटीज हुई हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनके ऊपर त्रासदियां हुई हैं, जिन्होंने त्रासदियां सही हैं, उनको न्याय मिले। केवल मेरी फैमिली को न्याय नहीं मिले, तमाम कम्युनिटी को न्याय मिले, तमाम जितनी भी हमारी बाकी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिले। अगर हमारे पास जिनोसाइड बिल आता है और एनेक्टमेंट ऑफ जिनोसाइड बिल होता है, तो इससे बड़ी बात
क्या और हो राजेंद्र सकती कौल है। जी, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं, टाइम्स नाउ के लिए ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, हम इसको कैंपेन की तरह चला रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं रीओपन कश्मीर फाइल्स एंड पूनम. While we thank Mr. Ashutosh Taploo and Rajendra Koul, the ecosystem must hear these voices, because this is the tragic reality of what happened in the 90s. This is not propaganda. Absolutely, and unfortunately, all of those people who are dismissing their voice, are dismissing the truth that the genocide even happened, should now perhaps come and listen to these voices and change their mind about what really happened and what they could have done to stop the genocide, the exodus and the fallout that has happened for the last 30 years. But with that, we're slipping into a quick break on this edition. Back in just 2 minutes.